Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 2, resources and their types. We have already done the introduction and lecture number 1. Today is the second lecture. And my dear students, before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer a few questions. Quickly tell me what is meant by a resource. हमने resource के बारे में पढ़ा था, उसकी types के बारे में पढ़ा था, तो quickly मुझे ज़रा सोचकर बताएं कि एक resource क्या होता है. कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, वो हमारे लिए एक resource बन जाती है. Anything that fulfills our needs is called a resource. Now quickly name the types of resources. Natural, human, capital. Very good. Okay, my dear students, now is time for an activity. So, this activity is given on page number 14 of your books. This is an independent activity. So मैंने सोचा कि ये मैं आपको जो है वो लेक्चर से पहले करवाती हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इससे लेक्चर जो है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. Look around yourself. You will see many things among them. There would be natural things such as soil. Make a list of all those things around you that are natural. ठीक है. अब आपको आइडेंटिफाई करना आता है नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज को. सो क्विकली अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं और सोचकर बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स हैं. मेरे पास फ़िलहाल अभी रूम में सिर्फ पानी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है मेरी बॉटल के अंदर, और कोई चीज़ अभी यहाँ पे नेचुरल नहीं है. एवरीथिंग इज़ ह्यूमन. कैपिटल है यहाँ पर, कैपिटल रिसोर्स है, जैसे कि टेबल है, दिस LCD, दिस रिमोट कंट्रोल, this marker. So these all things are capital resources. तो मेरे पास natural resource जो है वो अभी सिर्फ पानी है. आप ज़रा अपने घर के इर्द गिर्द या अपने स्कूल में इर्द गिर्द अपने रूम में देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो natural resource हैं. वैसे मुझे याद आ रहा है कि आज लंच में मैं एक एप्पल भी लेकर आई हूँ, that is also natural. ठीक है. So this is how you can sort out and think about the things which are naturally exist. Okay. Now, my dear students, let's move forward towards today's objective given on page number 13. So today's objective is identify natural resources, plants, animals, water, air, land, forest and soil. So आज हम सिर्फ natural resources को जो है वो identify करेंगे. ठीक है. So my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. He created the heavens without any visible support, and he placed firm mountains on the earth in case it would shake under you, and he spread all kinds of animals around it. He sent down water from the sky, with which we made every kind of good plant grown on earth. So, my dear students, इस Islamic perspective का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो है वो ज़मीन के ऊपर बेतहाशा जो है वो नेमतें हमें दी हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, वो ज़मीन को जो है उन्होंने बहुत मजबूत बना दिया है ताकि ज़मीन हिले नहीं. इसके अलावा अल्लाह ताला ने जानवर जो है वो फैलाए हैं ज़मीन पर. पानी आसमान से आता है और उससे जो है बेतहाशा जो है वो प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर ग्रो करते हैं. सो देयर आर सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस मेड बाय अल्लाह ताला. सो नाउ क्विकली आंसर, नेम सम नेचुरल रिसोर्सेज. प्लांट्स, animals, rain, mountains. Very good. Okay, my dear students, let's quickly open page number 14 in the books. Pause the video and open the page. I hope everybody has opened page number 14 in the books. We have already done the resources. Today we will identify the natural resources. So, natural resources, all the naturally occurring. Quickly read with me. Put your fingers where I will read. Natural resources. All the naturally occurring resources in a country are called natural resources. Pakistan is one of the rich countries in the natural resources of the world. It has rich soil, mountains, rivers, canals, forests, animals and minerals. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक मुल्क के अंदर जो भी नेचुरली चीज़ें अकर करती हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरत जिसकी है या जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी ज़रखेज़ या हमारी फर्टाइल सॉइल है.
क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो यहाँ पर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं, तो हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल है कि इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर अच्छी ग्रो करती हैं. सो लेट्स क्विकली लुक एट द टिडबिट्स. According to the United Nations Food and Agriculture Organization, Pakistan is second largest producer of ghee, third largest producer of chickpeas, fourth largest producer of cotton, mangoes and rice, fifth largest producer of milk, date, palm and sugarcane, sixth largest producer of apricot, oranges and wheat, and seventh largest producer of onion and wheat. So आप देखें कि कितनी ज़्यादा नेचुरली अकरिंग जो है वो चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पूरी दुनिया में, ताकि जो पूरी दुनिया के लोग हैं उसके लिए ये रिसोर्स बन जाए और सब जो है इसको इस्तेमाल कर सकें. आपको जो है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, आपकी बुक में भी हैं. नंबर 1 कोल है, फिर ट्रीज है और उसके बाद पानी है. सो दीज ऑल आर naturally occurring resources. So my dear students, now open page number 15 in your books. So we will start reading again. I hope everybody has turned to page number 15. So my dear students, अब हम one by one natural resources को discuss करेंगे. Some of the natural resources are discussed below. Plants. Plants and trees are important natural resources that play a vital role in our lives. Plants clean our atmosphere and make the weather pleasant. Human beings and animals get their food from plants. Food crops such as wheat, rice, maize, pulses, grains, etc. fulfill the world's food requirement. Cash crops such as cotton fulfill cloth requirements. Different medicines are made from plants. They also provide us wood for furniture. So my dear students, हमने सबसे पहला जो है वो नेचुरल रिसोर्स जो है उसको वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट, दैट इज प्लांट्स. सो आप देखें कि प्लांट्स से हमें कितने ज़्यादा जो है प्लांट एक कितना बड़ा रिसोर्स बन जाता है कि ये हमें साफ हवा देता है, हम इसमें सांस लेते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स. सो फर्स्ट रिसोर्स जो है वो हमें ये हो गया. इसके बाद ये फूड प्रोवाइड करता है हमें. आप देखें कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप प्लांट्स से ले रहे हैं. आप वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ग्राम्स, ये हमारी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. इसके अलावा जो हम कपड़े पहनते हैं दे आर मेड अप फ्रॉम कॉटन, कॉटन से बनते हैं ये. सो हमारी पहनने की ज़रूरत पूरी हो रही है. तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा हम अपनी ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई प्लांट्स आर रिसोर्सेज. और क्योंकि ये ह्यूमन मेड नहीं है, सो दैट इज़ वाई दे आर अ नेचुरल रिसोर्स. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड रिसोर्स, दैट इज एनिमल्स. Quickly read with me. Animals are another important resource in terms of food and clothing. Almost all of us get advantages from animals, directly or indirectly. We get milk, that is an essential component of our diet. Animals give us meat. We eat and enjoy different dairy dishes daily. We use the skin of animals in making the best quality leather. सो माई डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सेकेंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा विच इज़ एनिमल, विच इज़ ऑल्सो नेचुरल. अब आप देखें हम एनिमल से कितने ज़्यादा जो है वो फ़ायदे उठा रहे हैं. हम इसका दूध जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि जानवरों के मुख्तलिफ आप जो है वो घी इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, बटर इस्तेमाल करते हैं, चीज़ इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली पोल्ट्री, हम एग्स यूज़ करते हैं. सो दीज ऑल आर नेचुरल और ये हमारी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. इसके अलावा जो एनिमल स्किन है इससे लेदर बनता है जिससे आप जूते भी बनाते हैं और कपड़े भी बनाते हैं. सो एनिमल्स आर ऑल्सो a great resource to fulfill our needs. Now let's quickly look at the tidbits in the corner. Indus blind dolphin is national marine animal of Pakistan and it is endangered now. So my dear students, क्योंकि हम animal resource की बात कर रहे हैं तो जो इंडस डॉल्फिन है पाकिस्तान में होती है, it is blind और ये हमारा जो है वो मरीन नेशनल यानी कि पानी का जो है वो हमारा नेशनल जानवर है. लेकिन क्योंकि ये अब endangered है, इसकी तादाद बहुत कम रह गई है, तो it is endangered now. Now we will move forward towards the next reading. Water. Water is the basic need of life. Human beings, animals and plants cannot live without water. Pakistan is an agricultural country. Water resources are even more important for irrigation of crops. Pakistan uses approximately 95% of its water for agriculture.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पानी इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कि इसके बगैर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट सर्वाइव। सो सबसे पहले तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा जरखेज़ है, फर्टाइल है, तो यहाँ पे क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं जिससे हम ज़र मुबादला कमाते हैं। सो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। सो पाकिस्तान में 95% जो वाटर है वो एग्रीकल्चर बेसिस के ऊपर यानी कि क्रॉप्स को लगाने के लिए, इस सब खेती बाड़ी के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। सो वाटर रिसोर्स भी हमने पढ़ लिया, अब हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ अबाउट 29% ऑफ लैंड एंड 71% ऑफ वाटर। Human beings live on land and perform different activities to fulfill their needs. It is an important natural resource that provides oil, gas, and precious minerals. So my dear students, ज़मीन एक बहुत important resource है क्योंकि इसके ऊपर हम रहते हैं, हमें शेल्टर के लिए, यहाँ पर रहने के लिए जगह चाहिए होती है। सो जो हमारी दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, इसमें 29% लैंड है और 71% जो है वो पानी है ज़मीन के ऊपर। सो हमें अपने घर बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो ज़मीन है इससे हमें तेल मिलता है, गैस मिलती है, ये भी नेचुरल चीज़ें हैं। और हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मिनरल्स और जेम स्टोन्स जो हैं वो भी ज़मीन से मिलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर 16 in your books. Okay, now we will study about another resource which is air. Air is a necessary resource for the existence of life. The oxygen in the air is essential for breathing. So air कैसे हमारे लिए एक रिसोर्स है कि जो लाइफ गैसेस हैं आपके ज़िंदा रहने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए, वो दोनों एयर में मौजूद हैं। साफ़ हवा होगी तो आप साफ तरीके, आप खुल के सांस ले सकेंगे, आप हेल्दी जो है वो लाइफ आप अपनी गुजार सकेंगे। सो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। सो एयर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्विकली लुक एट द tidbit here in the corner. Second largest salt mine of the world are खेवड़ा mines in पाकिस्तान। ठीक है, तो खेवड़ा में हमारी नमक की कान है जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नमक की कान है। ठीक है, बिगेस्ट सॉल्ट माइन वी हैव इन पाकिस्तान। सो इट इज ऑल्सो अ ग्रेट नेचुरल रिसोर्स। नाउ क्विकली लुक एट द सॉइल. The soil of Pakistan is dry but generally fertile, due to which a variety of different plants, fruits, vegetables and crops grow here. So my dear students, जो हमारी मिट्टी है ये भी हमारे लिए जो है ये एक रिसोर्स है क्योंकि मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान की जो सॉइल है इट इज़ ड्राई बट इट इज़ फर्टाइल। सो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो फल और सब्जियाँ जो हैं और जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं। सो माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज़ टाइम फॉर सुपरवाइज्ड एक्टिविटी। ये सुपरवाइज एक्टिविटी के लिए आपको एक वाइट चार्ट की ज़रूरत है। वो चार्ट जो है वो टीचर पेस्ट करेंगी और उसके ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हमने अभी पढ़े हैं उनके नेम्स लिखेंगी और उसके बाद वन बाय वन स्टूडेंट्स विल कम। ग्रुप्स में स्टूडेंट्स जो है आप डिवाइड कर दें उनको और उसके बाद जो है आप स्टूडेंट्स से कहें कि वो वन बाय वन आएँ और आके जो है हर रिसोर्स के सामने उसका बेनिफिट लिखें। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। आप वर्ड्स में भी बेनिफिट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, क्लीन एयर, फूड। सो आप इस तरीके से जो है वो बेनिफिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सो वेरी इजी एक्टिविटी एंड यू विल थॉरली एंजॉय इट। प्लीज डू इट इन द क्लास. So my dear students, now we will move forward towards the practice. For practice, a worksheet will be provided to you by your teacher in print form, or you can simply download it from the description box below this video. So natural resources, quickly write down your name and your class, and then natural resource. Natural resources are the things that are found in nature that are useful to people. और उसके बाद which picture is not a natural resource. आपके पास कुछ resources यहाँ पे pictures में दिए गए हैं, आपको circle करना है उस resource को जो natural नहीं है इनमें से. Very good, you can easily do this. Where do we find natural resources? आप कहाँ natural resources मिलते हैं आपको? Around us, मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं ना, यानी कि from the rivers we get water, from the air we get oxygen, from the plants we get food. So इस तरीके से आप जो है वो you can write down the names. How can we use natural resources? अब आप किस किस तरीके से natural resources को use कर रहे हैं? Write any two benefits in the lines. ठीक है? For example, about the plants we get oxygen from the plants. From animals we get
different dairy products from the animals. So that is how we are using natural resources. Okay. Then next, which natural resources do we have to be careful not to use up? अब आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको हमें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज इट विल फिनिश अप? सॉइल, प्लांट्स, वाटर और एनिमल्स. वेरी गुड, वाटर इट इज. इट इज a limited resource and it can finish up. Okay. So my dear students, now is the time for another practice, written practice, writing exercise hai on page number 26. So question number 1 you will do in your notebooks. Describe the importance of animals in our daily life. आप जानवरों को किस किस तरह से ये आपको benefit कर रहे हैं, आपको वो benefits अपनी notebook में करने हैं. So this is a written exercise. Okay. So do it in your notebook and we will move forward towards your evaluation. Quickly tell me, what is a natural resource? Anything that exists naturally and fulfills our needs is a natural resource. Very good. Okay, my dear students, quickly note down your homework for today. So it is given on page number 24, picture reading है. So इस picture reading में identify and mark all the natural resources in the following picture. आपको इस picture में जितने भी natural resources नज़र आ रहे हैं, आपने उनको circle या underline करना है. Okay? या आप tick mark भी कर सकते हैं. So you will do it in your homework, and on page number 15, home activity number 1 is given. Write any 5 benefits of water. आपको पानी के 5 benefits लिखने हैं. Also write down its 5 uses. आपको इसके 5 जो आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी लिखना है. इसके अलावा यूज़ योर नोटबुक टू कंप्लीट योर टास्क. आपको अपनी नोटबुक में ये एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट करनी है. इट इज़ वेरी इजी. पहले आप उसके बेनिफिट्स लिखें, फ़ायदे जो हैं, फिर आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो यूजेस लिखें आप उसके. ठीक है, जैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. So use your notebook for that purpose, and we will move forward towards the wrap up of the lesson. Naturally occurring materials are called natural resources such as plants, animals, air, land, soil, etc. So my dear students, I hope you are fully able to identify all the natural resources now, and you can also tell their benefits and uses. I hope you have enjoyed the video. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.